editorial letters, most of you must have done in your 10th standard. I remember I have also done some of you with you. First, understand what is editorial letter. Any letter which is taking out, apprising the problems in the society or some issues, क्योंकि आपके उसमें in your curriculum it is mentioned that the editorial letters would be relating to the problems that people face. And while we are living in a country, हर तरीके की प्रॉब्लम आती है. कोविड आया तो we faced certain problems. लॉकडाउन हुआ, we faced certain problems. Like the schools were closed, the health service was affected, many of the students had to leave their even the studies in lack of employment of their parents or guides. Many parents lost their nears and dears one. ये तो एक एग्जाम्पल है. It may be related to anything that is happening. मैं ये यहाँ पर इसलिए भी आपको थोड़ा elaborate कर रही हूँ because your article writing is also concerned with editorial letters. जो आपका editorial letter का content होता है that is actually article. The only thing is that editorial letters are written for a newspaper. If the editor finds it suitable, he would be printing it in the newspaper as an article. अगर उसे लगता है कि this particular issue should be published in the newspaper, या फिर कुछ current topics चल रहा है, जैसे आजकल एक रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, तो उस पर हमने कोई अपना लिखा, या फिर जो yesterday there was a very big I don't really know about the issue, but I have been seeing the newspapers and the मतलब pop up करता जा रहा है कि some statement was given by a person and that has affected the entire world. The entire world is condemning India. The entire world is criticizing India. तो ऐसे वक्त में अगर हमें लगता है कि we should also express our views on such topics, वो हमारा बन जाता है editorial letters. Editorial letters, if they are good, they are printed as an article. Certain times there might be a directly आपका letter type ही उसको जो है they even share it. And that is the reason editorial sections, the letter which you are writing to an editorial editor should always comprise of good language. I'm not saying high language, I'm saying a good language. Appropriate words. And जैसा मैंने आपको application कम biodata में बताया था, if your formats are wrong, then definitely you will not be awarded any marks. So while we are writing the while we are writing the editorial sections, we have to be very particular about the format. और format हमारा वही चल रहा है जो 10th में भी था, that is we write the sender's address. आपका एप्लीकेशन बायोडेटा में भी सेम ही था. It is written in 2 to 3 lines depending on आपको कैसा मिला है. The date of that particular day. यहाँ the editor. And while you are addressing the editor, जब आप editor को address करते हो, T and E should be capital. These are parts of your format.
the name of the newspaper, the address if you know, and city. It's not mandatory that you are using the word expressing views on. Certain times it can be increasing inflation, increasing intolerance, increasing intolerance among youth. ऐसे भी आपके जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, बट सब्जेक्ट्स हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यानी कि 4 to 5 वर्ड्स और 6 वर्ड्स आपका होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस. It shouldn't never be a complete sentence. We divide this into paragraphs and 3 are there. कभी कभी तो किसी किसी बच्चे का 4 भी बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि 4 क्यों बन गया, 3 है, 2 नहीं होने चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक इतना सा आपने लिख कर दे दिया कि ये लो मैम कर लो. इट्स नॉट देयर. The first paragraph in any letter is always the introduction. We write different introductions which you will be doing while you are doing the questions. Like, may I request some space in your esteemed, in the column of your esteemed newspaper? Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to express my anguish views on the given subject. And sometimes, कई बार आप एक पर्टिकुलर जगह के रहने वाले हो और आपको सिर्फ अपने लोकल प्रॉब्लम को बताना है, आपके एरिया में वो प्रॉब्लम है. इट्स नॉट अबाउट द एंटायर. At that time, as an aware citizen of Dilshad Garden, I wish to express my concern. You have different openings. आपकी जो लेटर का जो ओपनिंग होता है वो अलग अलग होता है, and that is your expression. In the first paragraph, in brief, मतलब शॉर्ट में आप जो हो अपने सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन देते हो, थोड़ा सा, एक लाइन, एक या 2 लाइन बस. The second paragraph is complete development of the content. आपका जो सेकेंड पैराग्राफ है वो पूरा कंटेंट है जो आप लिखना चाहते हो. द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, या फिर प्रॉब्लम के कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, दैट वुड बी मेरिट्स, demerits, मतलब that depends on the kind of question you are going to get. More or less, according to the CBSE, you will be getting the problems and उसके consequences. मतलब ये प्रॉब्लम क्यों हुई और उसका क्या असर रहा. Why the problem arose and उसका क्या असर रहा. And then third, the solution. You think, no blaming, no blaming. You have to just बताना है आप क्या solution कहना चाहते हो. What do you think about the problems and how do you think that problem can be solved? Then the conclusion. Again, there are different kinds of conclusion. Hope my word reaches the mass. Hope my words get printed in your newspaper to reach the concerned authority.
here you leave a line. T and Y. Sincerely, truly. S small, T small, and the name of the person. The marking scheme goes in this manner. मतलब on a scale of 8 marks, अगर मान लो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मेट गोज फॉर 2 मार्क्स. नाउ व्हाट आर द फॉर्मेट? ये आपका पूरा, दिस इज आपका दिस सैल्यूटेशन, this is called as salutation, and this is called as subscription. इसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं. So this all includes your format, the sender's address, date, the receiver's details, subject, salutation, subscription, ये सब मिलाकर आपके 2 मार्क्स हो जाते हैं. एंड आपका एक्सप्रेशन इज हाउ यू स्टार्ट इट, किस तरीके से आप उसको स्टार्ट करते हो, what kind of language you are using, the punctuations, the grammar, the right manner, मतलब present past mix नहीं करना, then how nicely you have expressed your ideas, the words used, that all comes under expression. And please also mind that this is not only for this letter writing, this also goes for your article writing. वहाँ पर भी आपका ऐसा ही चलता है, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन. उसमें भी सेम आपका वही होता है कि एक्सप्रेशन आपके अच्छे होने चाहिए. And the content will be entire, how you introduced, develop and solution, ये सारा. So these are all, this is all how you write an editorial letter. कई बार, many times, मतलब कि the students make a small mistake in the ending. End करते हुए कहते हैं, hope you will solve our problem. The editor can never solve your problem because editor is not the solution provider. एडिटर आपका प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करेगा? एडिटर तो न्यूज़पेपर का हेड है. ही इज द ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर. वो आपकी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करेगा? हमारे घर के नीचे कूड़ा पड़ा तो क्या वो कूड़ा उठाएगा आकर आपके? नो. कोरोना है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो वो आपके लोगों को मास्क थोड़ी पहनाएगा? नो. सो whenever you are giving a conclusion, please do not say please do the needful. Hope you will understand my position, and he cannot understand your position. If he likes your content, he is going to publish it in the newspaper. तो कभी भी ऐसी ending मत लिखना. Hope you will understand the issue and solve the problem. The editor will never solve your problems. तो ये ending नहीं होना चाहिए. This is the format you can see. Here it is written, write a letter to the editor of a national daily. So when I was telling you the common mistakes the students make while they are writing the letters is, they understand, मतलब उनका दिमाग कहता है कि this national daily is the name of some newspaper.
So this is wrong. नेशनल डेली मतलब नेशनली, जो कि रोज डेली जो न्यूज़पेपर नेशन वाइड आता है, those newspapers which are published across India, that is national daily. And sometimes you may be given the word local daily. This is because some problems are taken नेशन वाइड. जैसे एसेंशियल प्राइसेस है वो तो सब जगह बढ़ रहा है, वेदर यू आर लिविंग इन मुंबई और यू आर लिविंग इन चेन्नई, इट्स द सेम. वेदर यू, सो दैट इश्यू हैज टू बी टेकन नेशन वाइड, तो उसको हमने नेशनल डेली में डाल दिया. while local daily means any newspaper which may be published, which may be circulated in a particular area. यानी कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, दिलशाद टाइम्स, दिल्ली टाइम्स, मतलब आपको जो उस वक्त में सही लगता है. इफ यू आर लुकिंग एट द एरिया, आपको ऊपर नाम दिया हुआ, जैसे केशवपुरम दिया था, केशव डेली, केशवपुरम डेली, गुजरात डेली, यू कैन यूज दीज वर्ड्स. लेकिन अगर नेशनल डेली है तो देन यू हैव टू यूज ईदर टाइम्स ऑफ इंडिया. अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आता है नेशनल डेली, तो ईदर यू विल यूज टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू इज देयर, द ट्रिब्यून इज देयर. लेकिन आप ये दोनों याद रख सकते हो. हाँ, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून, ये बहुत कॉमन है इसलिए मैं बता रही हूँ. in all or most of our CBSE questions you will find this word the Tribune. So you will write the Tribune. The Tribune is the name of the newspaper. The Times of India is the name of the newspaper. The Hindustan Times is the name of the newspaper. Next comes is, यहाँ तो I have written विशालपुरा अहमदाबाद करके मैंने लिख दिया है. But if you don't know, जैसे गुजरात का कैपिटल इफ यू नो अहमदाबाद है, या यू नो दैट गांधीनगर है, तो गांधीनगर गुजरात आप लिख दो. दिस इज हाउ वी फ्रेम द एड्रेस. अगर अब एड्रेस आपको नहीं याद होगा, फॉर दिल्ली आई विल गिव यू, मैं दिल्ली का लिखवा दूंगी आपको. टाइम्स ऑफ इंडिया इज बहादुर शाह जफर मार्ग. आपका जो टाइम्स ऑफ इंडिया जाता है उसका जो एड्रेस फॉर दिल्ली है, बिकॉज इन समटाइम्स इट मे बी ओनली आपका दिल्ली का ही है, दिल्ली सेट में दिल्ली आ जाता है. दो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन दिल्ली उनका दिल्ली आ जाता है. बट दो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग आउटसाइड लाइक आपके दिस क्या मौलिका हो गई, अंश हो गया, दोज हु आर, उनके लिए नेशनल डेली नाम लिखते हैं, दे डोंट टेल द सिटी. तो आप यू कैन राइट. For Delhi, it is 7 BZ mark, that is Bahadur Shah Zafar mark, Delhi. You can also use KG mark, कस्तूरबा गांधी मार्ग को KG मार्क भी लिख सकते हो आप. These are the addresses for Delhi. But if your address is for some other city, then you have to just write. Now let us come to the question part. You are Aman, you are disturbed. Now this is a problem which happens, इसीलिए ऐसे questions आते हैं.
How? Expressing your anguish and some measures to tackle the same. मतलब अपने दुख, अपने गुस्से को बताते हुए, your pain. Here I have used the word as an aware citizen. I feel dutiful to bring forth the problem faced by common man due to inflation. Then I have given some introduction. If you see, I have given this introduction. The prices of almost all the essential commodities have soared up in the recent past, whether vegetable staples or edible oil. Staples मतलब आपके वो रोजमर्रा में जो हम खाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, and soared मतलब increase. The world has yet not come over from the effects of pandemic. Many people have become jobless and many have lost the lives of their nears and dears. In this grim situation, rising prices are further added to the woes of people. Woes मतलब problem. जले पर नमक छिड़कना. इन दिस ग्रिम मतलब इतना, एक तो अभी मतलब कि हम लोग पैंडेमिक से बाहर नहीं आए हैं, ऊपर से हर चीज के प्राइसेस ज्यादा हैं. लाइफ हैज बिकम हार्ड. अकॉर्डिंग टू अ ट्रस्टेड सोर्स, the economy has been badly hit, especially the middle class and the honest taxpayers. It seems, मैंने आपको बताया था कि 3 is must, 4 कभी कभी हो जाता. Here I have used 4 paragraphs. It seems there is a backward shift. Everything is correlated. The increase in one single good affects many. तो जब है पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो सब्जी के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग भी उसको पेट्रोल के थ्रू ही लेकर आते हैं. अल्टीमेटली हर चीज का दाम बढ़ जाता है. Though the government is on its toes to tackle the chaos, on its toes to tackle मतलब वो अपनी एड़ी चोटी लगा रही है इस परेशानी को दूर करने के लिए, yet more incentive methods need to be applied, or else the faith of people would be shaken. There can be, ये हमने solution suggestions दिए हैं, ये हमारे हैं. There can be exemptions of direct and indirect taxes as temporary resorts. मतलब ऐसा नहीं permanently हमें नहीं करना, temporarily tax को थोड़ा कर सकते. Then hope my words get appropriate space in your prestigious newspaper and reach the concerned authorities who can give some relief. So this is one editorial letter. You can quickly note it down. And also let me know side by side. After 2 minutes, I'll be scrolling it up.
Is the first paragraph completed by all? Till edible oil. Bhuvan, Monica, Kashish. Kashish. So this is how an editorial letter is written. We will be practicing two more in our next session, that's in the next class, and then you will be aware with some portion. And kindly, क्योंकि if I tell you, go through the format again and again, keep in your mind format, content, expression, keep all these small things in your mind, like when it is National Daily, you have to address to the newspapers which are uh, circulated India wide. If it is a local, then only for your local area. Then while writing the name of the editor, yours sincerely, the way it has to be written, the grammar that we have to use, 3 paragraphs, all these should be there. बाकी आप लोग जो हो, over the period you will learn. See, you are in right now we are in June, so over the period while you are practicing again and again, you will learn the content, how to develop the content. But format should always be there, because format is more concerned. So with this, we'll end up this session for today. Meet you in the next class, right? Bye.